Jai Hind, student. Now we in the continuation of the factorization, I'm taking one more formula, that is factorization of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, right? Student, please concentrate because this formula is important as well as difficult to understand, right? Now see, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz can be write as the formula of this is x plus y plus z in one bracket, in another bracket x square plus y square plus z square minus xy minus zy minus zx, correct? This is the formula. Sometime in special cases when this becomes 0, x plus y plus z becomes 0, this becomes 0, then this is product of the same, so this whole quantity will become 0. ये पूरी quantity 0 हो जाएगी, and when this whole quantity becomes 0, so x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz, correct? So in this way we can factorize this, right? Now on the basis of this formula, I'm going to solve few questions. Please concentrate. See, in the first example, factorize 2 root 2 a cube plus 8b cube minus 27c cube plus 18 root 2 ab. See, this you have to factorize with the help of same formula, this formula, right? Now see here, you can see that it is already in form of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, right? इस फॉर्म में ऑलरेडी ये है, राइट? इसको हमें इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, दैट फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट व्हाट इज x, व्हाट इज y एंड व्हाट इज z, राइट? देन वी कैन अप्लाई ऑल दीज थिंग्स, राइट? So look for the xyz. 2 root 2 a cube can be write as root 2 a whole cube. 2 root 2 a cube can be write as root 2 whole cube. In the same way, plus 2b whole cube plus minus 3c whole cube. Here it minus, so cube करना है तो minus 3c को ब्रैकेट में रख के इसका क्यूब करेंगे तभी माइनस यहाँ पर आ पाएगा, राइट? So a cube plus b cube plus c cube. c is minus 3c, right? Means z is minus 3c. So x cube plus y cube plus z cube. At the place of z, write minus 3c because minus 3c का क्यूब करेंगे तो minus 27 आएगा. Now according to formula, here it will be minus 3xyz. So minus 3x is this, y is this, and z is minus 3c, right? So at the place of, see this formula, at the place of x, what you have to write? At the place of x, you'll have to write root 2a, right? At the place of y, you'll have to write 2b. At the place of z, you'll have to write 3c. Put the values. See, x plus y plus z. So x plus y plus z. In one bracket, another bracket, x square plus y square plus z square minus xy minus xy minus zx minus yz minus zx, correct? Solve this. This will become same. Root 2a square become 2a square, 2 2 जा 4b square, 3 3 जा 9c square, माइनस become प्लस, स्क्वायर है ना तो प्लस हो जाएगा, क्यूब होता तो माइनस हो जाता. माइनस 2 root 2 ab, दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 bc minus minus plus 3 root 2 ac. In this way we always factorize the given, correct? Now see one more example. P minus q whole cube, q minus r whole cube, r minus p whole cube. I told you that x cube in the given formula, you can see here that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Condition when x plus y plus z equal to 0. अगर ये सारी क्वांटिटी 0 हो गई तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएंगी, और जब ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी सो माइनस 3xyz राइट साइड में आएगा एंड x cube plus y cube plus z cube become 3xyz. Now see this example. This is x, this is y, this is z, right? X is what? P minus q, y is q minus r, and z is r minus p. When we apply x plus y plus z, जब हम x plus y plus z कर रहे हैं तो p minus q plus q minus r and plus r minus p.
p कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, दिस बिकम 0। तो फॉर्मूला क्या था कि जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाती है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बिकम 3xyz। तो जहां पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मीन्स इन पूरे की वैल्यू क्या होगी 3xyz। यहाँ पे x क्या था 3 p माइनस क्यू, y क्या था q माइनस r और z क्या था r माइनस p। So this will be the result for the following factorizations, right? This is very important. So many times it asks in the examination whenever papers set very difficult. This type of questions already always mentioned in the paper. Now students see one more example. Find the product of the given. इसका प्रोडक्ट में फाइंड आउट करना है। एज वी नो द फॉर्मूला दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर इन वन ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यू कैन सी दैट दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड दिस इज सेम लाइक दिस। ये इसी तरह दिख रहा है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसी फॉर्म में दिख रहा है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन फॉर्म ऑफ दिस सो दैट वी कैन इजिली गेट द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। नाउ सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है 3x हो गई है, करेक्ट। y की वैल्यू क्या हो गई है -5y नहीं है, ये प्लस -5 है, बिकॉज हेयर प्लस यहाँ पे फॉर्मूले में तो प्लस है ना, तो इसको प्लस बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, जब ये प्लस बनेगा तो ये पूरी क्वांटिटी -5y विल बिकम y, राइट। देन अगेन प्लस जेड क्या होगा -4, करेक्ट। सो अगर ये हो गया x, दिस इज y, दिस इज z, सो x स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 का वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर -4 स्क्वायर। देन क्या होता है आगे फॉर्मूला में, देखो आगे क्या है, दैट फॉर्मूला इज -xy माइनस जेड एस माइनस वाई जेड, करेक्ट। -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो माइनस विल बी सेम, एक्स वाई क्या है 3x इंटू -5y, माइनस विल बी सेम this into this, minus will be same -4 into 3x, correct। now solve this all, so this will become, ये सारी quantity will become, this all whole quantity will become the formula, this formula, इस पूरी जगह पे हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं अब, right। but what is x, what is y, what is z, this we have to always notice that at place of x will put 3x, right। At the place of y will put -5y, at the place of z will put -4, right, -3 into x into y into z, it will be 327x cube, then 525 125 y cube, this will be -125 cube, and 4 4 16 64 -64, this will become minus minus plus 3 3 9 9 5 45 45 4 180, so -180 xy. Thank you so much.